Hey everyone, hello, welcome and assalamu alaikum. Welcome back to the channel. Now, this is the second lecture of Cell, the Unit of Life. Okay, before starting the actual lecture, let us just see the NCRT and first answer the questions. Okay, now these are the questions that I said I will be deriving from NCRT. After the completion of your chapter, I will make sure to post the answers of this and a PDF of all the questions, okay, in my Telegram channel. So yes, the first question is, what is it that makes an organism living? Okay, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक organism को living बनाती है, which is nothing but cell, the unit of life. Okay, all organisms are composed of cell and its products. Cell and its products. And the third one is, unicellular organisms are capable of dash and dash: independent existence and performing the essential functions of life. Now the fourth one is, cell is the fundamental structure and dash unit of the life. Fundamental structural and functional unit of life. Functional unit of life. Scientist who first saw and described a living cell was Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek. Now, Robert Brown discovered nucleus. Matthias Claden was German botanist. In which year did Matthias Claden did examined plants? 1838. Okay. Now, 1838. What did the scientist observe from plants? The scientist observed first one is cells. Plants. All plants are composed of cells and products of cells. And the second thing is, it has a unique feature which is cell wall. Okay, yes, both the scientists observed this one. First, Claydon observed the cell made up of cells. All plants are made up of cells, and Schwann said that it has a unique feature which is cell wall. Who was British zoologist? It was Schwann. Okay. Matthias, no. Theodore Schwann. What is the unique character of plants? Cell wall. What is the hypothesis given by Schwann? Schwann क्या बोले थे? All animals and plants are made up of cell and its products. Okay, who modified the cell theory? Rudolf Virchow. Okay, now what is cell theory understood today? First, cells. All organisms are made up of cells and its products. And the second thing is that cells, pre-existing cells. All cells come from pre-existing cells. Okay. What does omnicellular acellular means? Cells and pre-existing cells? Yes. Now, that's it for this one. Okay.
Now let us move on to the NCERT part. Oh, sorry. Now, here is that. Let me first erase all these just. Okay, now moving on. तो देखो, पहले क्या है, when you look around you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself what is that and makes organism living, or what is that an inanimate thing does not have which living thing has. The answer to this question is cell, the basic unit of life, which is cell. Okay, now all organisms are composed of cells. Some are composed of single cell and others are which is known as unicellular organism. Okay, unicellular organisms and many cells means multicellular organisms. What is cell? Cell है क्या? Okay, unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. Anything less than a complete cell, okay, a complete structure of cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structural functional unit of all living organisms. Okay, I think we should underline this one. Okay, Anton von Leeuwenhoek was the first to describe the cell, and Robert Hooke was the first one to see a cell in a dead cork, which was basically he saw the cell wall. Okay, he did not saw a living cell, he saw a cell wall of a dead cell. Okay, cork is nothing but dead cells. Okay, Robert Brown discovered nucleus. Now Robert Brown is also important. I think he came in the 2024 paper. I will cross check the paper once. The invention of microscope and its improvement leading to electron microscope revealed all the structural details of the cell. Okay, now moving on to the cell theory. अब इस ये पॉइंट से बोलना क्या चाह रहे कि माइक्रोस्कोप जब आया, माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव करते करते जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, उसकी वजह से वी आर एबल टू सी द structure of cell easy. Okay, now moving on, cell theory. In 1838, Matthias Claden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form tissues of the plant. At the same time, Theodore Schwann, in the 1839 British zoologist, studied different types of animal cells and reported that cells have thin outer layer which is today known as plasma membrane. He also concluded, based on his studies on plant tissues, that presence of cell wall is the unique character of the plant cells. On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis composed of cells and products of cells. Okay, let me say here. Okay, Schwann and Claden. Okay, now the first Claden in 1838. Okay, now Schwann in 1839. Okay, he studied plants and he said that all plants are composed of cells and okay, that cells make tissue, different types of tissues. Okay, now in 1839 he Schwann studied both plants and animals. He was a German zoologist, British zoologist, and he was a German botanist. Okay, so he studied in animals and said that animals are also made up of cells, plus they have a thin layer which today known as plasma membrane. Okay, now this plasma membrane, and also said that plants have a unique feature which is known as cell wall. Easy? Yes. Now this
scientist also proposed a hypothesis. Hypothesis is nothing but not fully corrected or not fully, what can I say, both of them did not came together until then, and Schwann already proposed that hypothesis that plants, animals both are composed of cells. Okay, now Schliden and Schwann together formulated cell theory. It is so important. And then ये लोग ये तो बोल दिए बट ये एक्सप्लेन नहीं करे कि सेल्स आते कहाँ से, फ्रॉम वेयर सेल कम. देन फिर एंट्री हुई कहानी में रुडोल्फ वर्चो की 1855 में, जो कि एक्सप्लेन करे सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर formed from pre-existing cells, omnicellular, ecellular. He modified the hypothesis of Schliden-Schwann to give a cell theory final shape. It is also important. Final shape कौन दिए थे? He gave the final shape to the cell theory. It can be a question in your paper that who gave a final shape to cell theory. The answer will be Rudolf Virchow. Okay, now cell theory as today understood is all living organisms are composed of cells and products of cells. All cells arise from pre-existing cells. Now 8.3, if we go, let us first यहाँ पे जाएंगे अपन, पहले नोट्स देख लेंगे, उसके बाद वी विल कम टू द नेक्स्ट थिंग. ओके ओके, now moving on to the prokaryotes 9. Overview of cell. Let us see the overview of cell first. Okay. Now an overview of cell. You have earlier observed cells in onion peel and human cheek. Okay, now in onion peel all plants, okay, on ऑनियन पील और या फिर ह्यूमन चीक सेल को अपन माइक्रोस्कोप के अंदर देखे प्रीवियस क्लासेस में. ओके, तो ऑनियन पील का जो सेल है वो प्लांट का है, और जो ह्यूमन चीक का सेल है वो एनिमल सेल है. ऑफकोर्स जो प्लांट सेल है उसमें डिस्टिंक्ट सेल वॉल थी और इसमें सेल वॉल नहीं थी. यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन थी, ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड सेल वॉल इज ऑल्सो नोन एज आउटर मेम्ब्रेन which is delimiting structure in plant cell, animal cell. Okay, now both of them have a membrane bound structure which is known as nucleus, because plant and animal both cells come in plant and animal cells, okay, come in eukaryotes. Okay, some plants come in prokaryotes, but no, not plants. Okay, eukaryotes में आते हैं दोनों भी. Because they are in eukaryotes, उन लोगों के पास एक membrane bound nucleus है. अब ये membrane bound nucleus में there are chromosomes. Okay, that chromosomes are containing genetic material which is also known as DNA, deoxyribose nucleic acid. Okay, now cell types. There are two types of cells. There are two types of organism based on this type of cell they are having. मतलब देखो, कोई जो organisms के पास सेल है और सेल के अंदर membrane bound न्यूक्लियाई है उसको बोलते हैं यूकैरियोट्स. पर whereas जो organisms के अंदर जो सेल्स है उन लोगों के पास अगर membrane bound न्यूक्लियस नहीं है तो उन लोगों को प्रोकैरियोट्स बोलते हैं. Now moving forward to explaining यूकैरियोट्स के पास membrane bound ऑर्गेनेलीज भी रहते क्योंकि उन लोगों के पास membrane bound न्यूक्लियस है. ओके, डब्बे में डब्बा है. देखिए, here more डब्बास are found. Okay, whereas in prokaryote there is no डब्बास. Okay, now endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies, vacuoles, all those are membrane bound organelles. I suggest all of you to just remember all this because it will be easier, or else you can easily remember all these because we are going to study each of them in a very vast way, और क्या बोल सकते बहुत अच्छे से अपन आगे में पढ़ेंगे उसके बारे में. लिहाजा now moving on, माइक्रो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोकैरियोट्स जो रहते हैं, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड
प्रोकैरियोट्स में, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं रहते। ओके, एंड वन मोर थिंग इज टू बी सेड, देखो साइटोप्लाज्म दोनों में भी प्रेजेंट रहता है और ये ऑक्यूपाई करता वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में भी साइटोप्लाज्म रहता है और ये मेन एरेना है किसका, सेल्यूलर एक्टिविटीज़ का। वेरियस केमिकल रिएक्शंस जो है इसमें आकर होती और इसकी वजह से ही सेल लिविंग स्टेट में रहता। फॉर एग्जांपल अगर सेल में केमिकल रिएक्शंस नहीं हुए तो सेल लिविंग नहीं कहला सकता। ओके, बिकॉज metabolic activities which is chemical reactions agar is essential for a living cell. Now ribosomes are also non membrane bound organelles, ये दोनों में भी रहते हैं। इसमें सेल जो है साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज, सेल के साइटोप्लाज्म में भी रहता और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज में भी रहता, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ ER दोनों में भी रहता, बट प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पे प्रेजेंट रहता। ओके, नाउ एनिमल सेल्स में एक सेंट्रोसोम बोलकर ऑर्गेनेली रहता जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। ओके, और ये हेल्प करता सेल डिवीजन में प्रोकैरियोट्स के अंदर, नो सॉरी एनिमल सेल्स के अंदर, आई एम सो सॉरी, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली रहता। सेल्स आर डिफर इन साइज, शेप, एक्टिविटीज। ओके, माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट सेल है। ओके, बल्कि माइकोप्लाज्मा का और एक डायग्राम में 0.1 मिलीमीटर के लेंथ का बताया माइकोप्लाज्मा को, बट ये दोनों भी आप लोग माइंड में रखिए इन दोनों को। वेराज बैक्टीरिया जो है 3 to 5 मिलीमीटर रहता है, वेराज जो एक सिंगल सेल लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है वो है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, वेराज ये पूरी यूनिसेल्युलर थे। अब मल्टी सेल्युलर में देखिए अपन तो ह्यूमन RBC जो है 7.0 मिलीमीटर का रहता है इन डायमीटर, और नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है। ओके, सेल्स की शेप भी बहुत सारे अलग अलग रहते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस लाइक डिस्क, पॉलीगोनल, कॉलमनार। अगर उसके एग्जांपल्स यहाँ पे देखें तो अपन देखो यहाँ पे फर्स्ट वन इज RBC। नाउ दीज RBCs रेड ब्लड सेल्स राउंड है और बाई कॉन्केव है, वेराज ये जो वाइट ब्लड सेल्स है वो है एमीबियाइड। कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स लॉन्ग है और नैरो है, कॉलमनार है बेसिकली शेप में। एंड हियर देखो ये वाले क्या है, ब्रांच्ड है एंड लॉन्ग है, नर्व सेल, whereas tracheate elongated है, elongated is nothing but like this. Okay, and mesophyll cells are round and oval. Simple? Yes. Now moving on to the next topic. Now this topic is a little bit क्या बोलते हैं इसको attention देने की ज़रूरत है। Now see here, prokaryotic cells. Prokaryotic cells. Now talking about prokaryotic cells जो है ये रिप्रेजेंट करते बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन algae, माइकोप्लाज्मा और पीपीवेलो दोनों भी सेम है, बट फिर भी जैसा NCERT में लिखा हुआ था आई जस्ट रोट इट लाइक दैट, बट माइकोप्लाज्मा एंड पीपीवेलो बोथ आर द सेम ऑर्गेनिजम्स। नाउ रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीवेलो। स्मॉलर है, ये मल्टीप्लाई करते रैपिडली। अब देखो यूकैरियोटिक सेल इतना है, प्रोकैरियोटिक सेल इतना है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में कौन जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला ही। ऑफ कोर्स इट विंस बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। ओके, सो इट इज़ ईजी टू मल्टीप्लाई। नाउ वेरी ग्रेटली इन शेप और साइज और बट एंड 4 बेसिक शेप है बैक्टीरिया के। देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है, ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेनली बैक्टीरिया आता, बहुत सारी जगह NCERT में प्रोकैरियोटिक सेल की जगह बैक्टीरिया लिख दिए। ओके, एंड क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ज़्यादातर बैक्टीरियाज ही आते। ओके, ये क्लियर करते हुए आगे जाएंगे अपन। बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलम, ये पहले के चैप्टर्स में भी पढ़े होंगे, बट इट्स सो ईजी। 4 बेसिक टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है। नाउ देन मूविंग ऑन, the organization of prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotic cells exhibit wide variety of shapes and functions. Okay, जो लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या है, मीजोजोम है या सेल वॉल है, ग्लाइकोकैलिक्स है, वॉट एवर इट मे बी, कोई भी शेप हो, सेल हो, सबका ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा ही रहता, ये बोलना चाह रहे हो लोग। ओके, नाउ ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल कैसा भी है पूरे प्रोकैरियोट्स में,
except mycoplasma, which is nothing but PPLO, pleuropneumonia like organisms. Okay, now other one is cytoplasm सबके अंदर filled है, वो तो कैसा भी मालूम है अपने को. नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये भी मालूम था, प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस भी नहीं रहता. वेर एज जेनेटिक मटेरियल जो है उसको भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं है, बस इसीलिए तो प्रोकैरियोटिक सेल है वो. ओके, जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, नो मेम्ब्रेन इज फाउंड. नाउ जीनोमिक डीएनए जो है वो सिंगल क्रोमोसोमल है एंड सर्कुलर डीएनए भी है उसके अंदर. सिंगल क्रोमोसोमल जीनोमिक डीएनए एंड सर्कुलर डीएनए. वेराज सबके पास थोड़े स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी रहता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ये है एक सेल. ओके, ये है लोगों का जीनोमिक डीएनए. ओके, ये तो रहता ही, साथ में एक थोड़ा सा सर्कुलर डीएनए भी रहता है ऐसा ऐसा. ओके, नाउ दिस सर्कुलर डीएनए इज नोन एज प्लाज्मिड. अगर ये प्लाज्मिड को अपन बाहर भी निकाल दिए तो 10 सेल कैन सर्वाइव विदाउट इट. ओके, the cell can survive without it. Now this plasmid have a unique phenotypic character. Now unique phenotypic character is nothing but कोई भी, फॉर एग्जाम्पल अगर वो प्लाज्मिड है तो उसका कलर पिंक है, फॉर एग्जाम्पल, इट्स एन एग्जाम्पल. हाँ, अगर वो प्लाज्मिड को अपन निकाल दी, ये है मेन जीनोमिक डीएनए, अगर ये प्लाज्मिड को मैं निकाल दी तो दैट पिंक विल बी नॉट देयर, इंस्टेड इट विल बी वाइट और कलरलेस. ओके, easy. Now that was for an example only. Now unique, जैसे कि resistant to antibiotic, example से समझ गए होंगे आप लोग. Now यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन रहती. ओके, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी रहता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दोनों भी यूकैरियोटिक सेल में रहता. बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स रहते, मीसोसोम्स रहते और इंक्लूजन बॉडीज रहते. और मीसोसोम जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर. ओके, नाउ मूविंग ऑन, राइबोसोम्स यू नो, मीसोसोम इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ plasma membrane. Inclusion bodies are nothing but reserved food materials without any membrane. Okay, moving on. Cell envelope and its modifications. Cell envelope and its modifications. Cell envelope is 3 tightly bound layered structures. Okay, देखो सेल एनवेलप इज नथिंग बट 3 लेयर्स है जो कि टाइटली बाउंड है. ओके, सी व्हाट आर दोज 3 लेयर्स, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, बिफोर गेटिंग इनटू ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूसिवली, लेट अस सी दिस. देखो सबके डिस्टिंक्ट फंक्शंस है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग फंक्शंस है, बट टुगेदर पूरे एक साथ मिलके एक सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर के जैसा काम करती है. ओके, अ सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर. वेर एज बैक्टीरिया जो है बाई ग्राम विज बोल के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक है नहीं बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. वो एक है ग्राम पॉजिटिव, एक है ग्राम नेगेटिव. जो ग्राम स्टेन को ले लेते थे उन लोगों को पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते थे और जो ग्राम स्टेन को नहीं लेते थे उन लोगों को नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते थे. सिंपल एज दैट. अगर इसकी प्यूरी थ्योरी होना है आप लोगों को तो यू कैन सी माई अदर वीडियोज़ इन विच आई have explained, I think. Yes. Okay, now moving on, or else I will make a video about it, but it's not that important, you can accept it totally, like skip it. Moving on, if you don't have time, or else it is good to like see that video or learn about the Gram-Viz wala experiment. Now moving on to the glycocalyx part. Glycocalyx क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है. आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर की लेयर है. ये क्या है, इसके पास कंपोजिशन और थिकनेस में डिफरेंट रहती पूरे डिफरेंट बैक्टीरियल सेल्स में. कंपोजिशन एंड थिकनेस मतलब किससे बनी हुई है और उसकी थिकनेस क्या है, छोटी है या फिर लाइक पतली सी है या फिर लूज है, थिक है, टफ है, वॉट एवर इट मे बी. ना उसके हिसाब से दो हिस्सों में डिवाइडेड है. ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह की होती, एक तो है लूज शेथ एंड अनदर इज थिक एंड टफ. जो लूज शेथ रहती है उसको स्लाइमी लेयर भी बोलते हैं क्योंकि वो थोड़ी चिपचिपी रहती. एंड थिक एंड टफ इज कैप्सूल. ईजी, वेरी ईजी. नाउ मूविंग ऑन टू द सेल वॉल. सेल वॉल क्या करती, डिटरमाइन करती किसका शेप
सेल का शेप सेल वॉल डिटरमाइन करती, इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड वन मोर थिंग, इट प्रिवेंट द सेल फ्रॉम bursting off or collapsing. And moving on to प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर अपन लगा देखें तो पहले यहाँ पे देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल. सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? थोड़ी चीज़ों को अंदर आने देती उन्हें और थोड़ी चीज़ों को अंदर आने नहीं देती. ओके, फॉर एग्जांपल ये है, इट इज़ ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड देन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे से पूरी चीज़ें यहाँ तक टच करते, मगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन लोगों को अंदर, थोड़ी चीज़ों को अंदर जाने देती जो कि सही है सेल के वास्ते, जो नहीं है उन लोगों को अंदर जाने नहीं देती. दैट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल द cell membrane. Okay, now interact with the outside world. Okay, and structural similar है यूकैरियोटिक सेल का. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपन पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, लिपिड से, फॉस्फोलिपिड से जो बनी हुई रहती ना, वो सेम स्ट्रक्चर रहता प्रोकैरियोटिक सेल में भी, वही बोलना चाह रहा हूँ. मेरा स्पेशल एक्सटेंशंस जो इसके रहते वो है, एक उसमें से एक है मीजोजोम. मीजोजोम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है इनटू द सेल, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ऐसा एक्सटेंशन है उसका. ओके, those are all the extensions of plasma membrane. Now इन लोगों के तीन फॉर्म रहते हैं, वेसिकल, ट्यूबुलर और लैमिनी. वेसिकल इज नथिंग बट लाइक दिस, ट्यूबुलर इज नथिंग बट लाइक दिस एंड लैमिनी इज नथिंग बट लाइक दिस मे बी. ओके, नाउ those are the forms of mesosomes, nothing. और ये हेल्प किस में करती? पहले तो ना एक सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प कर सकती. क्यों? क्योंकि इन्हें सरफेस एरिया बढ़ा, देखो इसका सरफेस एरिया बड़ा है या फिर इसका सरफेस एरिया बड़ा है, इसकी वजह से एंजाइमेटिक कंटेंट भी ज़्यादा रिलीज़ हो सकता. फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल्स है, अगर ये सेल्स रिलीज़ कर रहे हैं एंजाइमेटिक कंटेंट, तो इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया एज वेल एज द एंजाइमेटिक कंटेंट. सो सिक्रीशन प्रोसेस में सरफेस एरिया को बढ़ाती इन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ाती. ईजी. नाउ रेस्पिरेशन में हेल्प करती है और डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल में हेल्प करती. सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करती. सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करती प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल इसमें तो सेंट्रोसोम है नहीं खींचने के लिए, तो मे बी फॉर एग्जांपल यहाँ पे है मीजोसोम्स, दो मीजोसोम्स है, यहाँ पे है नहीं, जैसे दोनों चिपके हुए हैं फॉर एग्जांपल सेल्स, तो इट विल लाइक ऐसा है नहीं, जैसे कुछ फॉर्म कर लेते हैं ये लोग, फॉर्म करके there will be a distribution of cell in prokaryotic cells. Okay, not to worry about going too deep, just what it helps in cell wall formation, DNA replication and distribution of the daughter cell, respiration, secretion processes, increase the surface area and enzymatic content. Those are the four things which you need to keep in mind for mesosome. Mesosome is important. Now also that was a characteristic of plasma membrane. Now talking about the bacterial cell, अगर bacterial cell जो है वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, अगर नॉन मोटाइल है तो जाने दो, बट वेराज अगर मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजेला रहता है जो कि एक्सटेंड होता है सेल वॉल से, नॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल से एक्सटेंड होता है फ्लैजेला. इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड मेक श्योर टू पुट द रेड स्टार हियर सो दैट यू डोंट भूलना नहीं है उसको. ओके, ना नंबर एंड अरेंजमेंट जो है वेरी करता है, किसी के पास 9+12, 9+5, वॉट एवर द अरेंजमेंट मे बी ऑफ द फ्लैजेलास, बट फ्लैजेला के पास जो है 3 पार्ट्स रहते, फिलामेंट हुक, filament hook and basal body. The longest one will be the filament which is जो सेल सरफेस को अटैच रहता, वेराज दो भी और दो रहते, पाइलाई एंड फेब्राई. पाइलाई इज लाइक दिस, ये सेल है तो सेल के ऐसे एक्सटेंड करते एक एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के जैसा, और एक स्पेशल प्रोटीन से बने हुए रहते जिसका नाम है पाइलिन. ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट आई जस्ट मेंशन दैट. नाउ दिस फेम्ब्रियाई इज नथिंग बट स्मॉल ब्रिसल फाइबर्स जो कि स्प्राउट आउट करते लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल ये है ना, ये सेल है, ऐसे ऐसे स्प्राउट आउट करते हैं, बहुत बहुत बारीक ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं. ये हियर है, देखिए इधर भी है. स्प्राउट आउट ऑफ दिस सेल हेल्प्स इन अटैचमेंट टू रॉक्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ होस्ट टिश्यू. नाउ राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज, ये लास्ट टॉपिक है, देन वी विल बी डन विद द लेक्चर. ओके,
राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी. राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो राइबोसोम्स विल बी अटैच्ड टू देम. दैट्स इट. 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन लोगों का साइज रहता है. 2 सब यूनिट से बने हुए रहते हैं, 50s एंड 30s. ये दोनों को एक साथ प्रेजेंट करे तो 70s आता. अब कैसा आता बोले तो देयर विल बी 2 सब यूनिट्स अटैच्ड लाइक दिस. इन लोगों का प्लस माइनस आपको करने नहीं आता. डोंट गो देयर एंड से दैट 15 और 60 70 80 80s होता, 70s कैसा होता. नो, 70s ही होता. कैसा होता एक और एक वीडियो आई विल बी पोस्टिंग ऑन द चैनल. So just see that how 70s and 80s ribosomes are there. Or else फिज़िक्स वाला के एक सर है, उन्होंने भी उनके लेक्चर में ये अच्छे से समझाया कि कैसा रहता हो. यू कैन जस्ट सर्च दैट. ओके. नाउ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, मतलब इससे ही प्रोटीन जो है सिंथेसाइज होता है. मैनी राइबोसोम्स जो है एक सिंगल mRNA को अटैच हो जाती है जो कि एक चेन फॉर्म कर देती है. देखो ऐसा यहाँ पे कैसी चेन है, ये पूरी एक क्या बोलते हैं इसको आप, ये है एक mRNA. इसको पूरे है नहीं जैसा राइबोसोम्स ऐसा 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 चिपक है. ओके. ना पूरी एक चेन के जैसा फॉर्म कर दिया. इसको ही बोलते हैं पॉलीराइबोसोमल चेन और पॉलीसोम. ओके. Now the ribosomes of polymer translate the mRNA into proteins. Easy. Now inclusion body ये एक reserve material है किसका, plus in prokaryotic cell and stored in the cytoplasm. Cytoplasm है. For example, see here, this is the cell. Cell में ना reserve material के वास्ते कोई तो membrane bound है ही नहीं. तो जो same type के molecules रहते हैं वो पूरे एक जगह ऐसे जमा हो जाते हैं. For example ये ग्लूकोज का है, ये कोई और का है, फॉस्फेट का है, या फिर ये कोई और ग्रैन्यूल है. इन लोगों को पूरे ग्रैन्यूल है बट ये यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहती. नो मेम्ब्रेन बाउंड, लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म. ओके. नाउ एग्जांपल फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल. ओके. नाउ वन मोर थिंग, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं किसमें, ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में गैस वैक्यूल प्रेजेंट रहता. दैट्स इट. इम्पॉर्टेंट. yes, that's it for the video. I hope you all enjoyed this video as well. As if you did, आप लोग अच्छे से पढ़िए and yes, subscribe to the channel for more such videos. I will be making another video tomorrow. Hope so. That's it. Yes. Allah Hafiz and take care. Bye bye.